चिल्ड्रन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है, देखो x इज इक्वल टू 1,3,5, y इज इक्वल टू 1,2,3। इसने पूछा है कि देन x इंटरसेक्शन y, ए दे रखा है 1 2 3 4 5, बी है आपके पास 1 2 3 5, सी है देखो आपके पास 1,3 एंड डी है आपके पास 4। तो देखिए इस क्वेश्चन में चिल्ड्रन आपके पास x दे रखा है, दिस इज 1,3,5, ओके, और y आपके पास दे रखा है, दिस इज 1,2,3, right? Okay, so this is given to you. Now he is saying then x intersection y. तो चिल्ड्रन x इंटरसेक्शन y आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज 3 इज द 1 एंड 3, 1,3। थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं चिल्ड्रन। देखिए x, अगर आपने इसको डिफाइन करना, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स x एंड y, अगर मैं इसको यूं करके लिखूं, x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू x such that x belongs to capital X and x belongs to y, right? अगर आप थोड़ा सा इसको एक और लॉजिकली देखें चिल्ड्रन, जैसे सपोज दिस इज योर x in Venn diagram, this is y, this is y. Now common element between x and y is 1 and 3, so this is 5 here and 2 here actually, right? So this portion you can understand, this portion here is x intersection y. So he is asking here what is x intersection y. But you should go through that whenever we talk about intersection you get and here, right? But if it is x union y, suppose if I am taking here x union y, then this is x union y. This is, how will you write it children? X such that x belongs to x, or here x belongs to y. It's like that. In union children, in union you will consider all the elements. See, this is x, this is x, this is y, and all this shaded region, all that is nothing, that is x union y. So here only this portion is x intersection y, right? And you should be familiar with this thing that in intersection you get and here it is. So the answer to this question is, you can see here, that is your C part is the answer to this question, right? It's okay children? So have you understood it? Okay. Let us start with the next question children. Here he says the correct match of the following. You have given two columns, column 1 and column 2. So here he is saying that polynomial function, then you have constant function, then rational function, then modulus function, and ABC option is also given there, you can see here, and you have to find the proper match. This is matching type of question children. Let us discuss this question. Here in this case, first is your polynomial function, polynomial function, okay? So I am talking about polynomial function. So here, what is polynomial function children? See, polynomial function is fx is equal to 2, this is x square,
as you see here is given to you x square plus 2x plus 3. This is your polynomial function. Then he is talking about the constant function. So what is constant function here? The value of that function which will not change, which remains constant, and that is nothing, that is fx is equal to 2. X belongs to R. So this is your constant function. Then you have rational function. Children, I'm talking about rational function. So what is rational function? A function which can be put in the form of p upon q, right? You can write it any function. If you write it like this, fx upon gx, where gx should not be equal to 0. Children, if gx is 0, anything divided by 0 is not defined. So this you have to write condition. So that is your rational function. Then you have the modulus function, children. That is modulus function. So which function is modulus? Could you tell me which function is modulus? This one. Here modulus function is this, right? The first one. See, the first one. You can understand this function in this way, like this. This is equal to minus x plus x if x greater than 0, minus x if x less than 0. There are some more functions are given in your book. You should go through. The only thing is that whenever you go through in mathematics, in any area, you should have a fair understanding of all these functions, their domain, their range, right? Greatest integer function is there. So you have fair understanding, logarithmic function, exponential function, algebraic function, and we have this polynomial or algebraic function. So you should have fair understanding. So this question. So you can see now here which is the correct match. Now just check out which is the correct match. First is your polynomial function. So answer A, this one is your polynomial function. So first part is your polynomial function. The match of this polynomial function is with what? This is B, right? This is B part, okay, polynomial function. And then we have constant function. The match for constant function is D, right? And rational function is C. So I think you have the option B is the accurate option, right? Option B. फर्स्ट देखो, फर्स्ट के साथ आपका B है चिल्ड्रन, सेकंड के साथ D है, थर्ड के साथ आपका C है, एंड फोर्थ के साथ आपका A है. So the answer B is the correct answer to this question. Clear? Okay. Let us go through the next question, children. Here he says the value of sine 765 degree is, here A part is 1 by 2, B is 1 by under root 2, C is 1, D is 0. Listen children, here you can write it like this: sine 2 into 360, that is, then it comes out to be 720, and if you subtract it you get 45 plus 45, right, like this. And sine, now you just check out one thing. I just want to tell you a very simple trick to understand this. देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पे this is one round 360, then 720. After 720 you are coming in the first quadrant, right? First quadrant. See, add sugar
to coffee. Add sugar to coffee, or all school to college. You can learn it this pattern. Here A stands for all, S stands for sine, cosecant, T stands for tan cot, and here C stands for cos, secant. Just try to understand, here all are positive, here these two things are positive, rest are negative. Here these are positive, rest are negative. Here these are positive and rest are negative. एक तो आप ये चीज याद कर लो चिल्ड्रन, पहली बात। दूसरी, जब भी आप 360, देखो ध्यान से देखो, अगर 360 से आप इधर जाओ या इधर जाओ, इधर जाओ या इधर जाओ, तो यहां पे साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का। यहां से आप यानी 360 प्लस माइनस जाओ या फिर 180 प्लस माइनस जाओ चिल्ड्रन, ये आपका सेम रहता है, यानी साइन साइन कॉस कॉस टेन टेन कॉट कॉट, राइट, सेकंड सेकंड कॉस सेकंड को। अगर आप 90 प्लस इधर को या इधर को जाते हो तो फिर आपका साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, टेन कॉट में, है ना, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेकंड कॉस सेकंड, है ना। ये आपका 90 प्लस में भी होता है और 270 में भी होता है चिल्ड्रन, राइट, 270 में भी। तो आप समझिए, देखो अब इस केस में आप यहाँ पे 360 प्लस प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो साइन का साइन ही रहेगा और 45, एंड दिस इज 1/√2. So answer to this part is, as you check it here, that is B part is the answer. Remember, suppose आप यहां से इधर आ रहे हैं, सपोज आपके पास है यहाँ पे, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास है साइन 210 चिल्ड्रन, सपोज साइन 210, हाउ विल यू राइट इट, साइन 180 प्लस 30। अब आप यहां से देखो, आप सेकंड क्वाड्रेंट देखो, दिस इज 180 प्लस 30, आप कहां पे जा रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टेन के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं, तो एक तो माइनस का साइन होगा और साइन का साइन ही रहेगा, सी साइन 30, तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस हाफ, माइनस हाफ। अच्छा, ये 270 में अगर आप जाते हैं, जैसे 270, चलो ऐसे में एक और एग्जांपल लेता हूं, साइन 300, ये लो मैंने लिया साइन 270 प्लस 30। अब देखो चिल्ड्रन, साइन 270 प्लस 30 कहां पे जा रहे हो आप, कहां पे जा रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा। बट साइन यहां पे जाके क्योंकि कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज -√3/2। ये जो आपकी ट्रिक मैंने आपको बताई, इससे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन चिल्ड्रन काफी आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर चिल्ड्रन? Children, we have another question where he says you have to find the value of iota raised to power 9, iota raised to power 9 plus iota raised to power 19. He says is equal to A part is 1, B is 2, C is 0, D is none. See, आपको सभी को पता है चिल्ड्रन कि iota square -1 होता है, तो this is very easy question. Iota square, this is 4 into iota plus iota square 9 into iota. So this is -1 raised to power 4 into iota plus -1 raised to power 9 into iota. सी चिल्ड्रन, अगर आपका इवन पावर है ऊपर तो पॉजिटिव में आ जाएगा, ये ऑड पावर है तो नेगेटिव में आ जाएगा, कैंसल आउट, आंसर इज 0. So answer to this question is C part. This is very easy question children. So I hope you have understood it. Children, here let us start with another question where he says the value of limit x approaches to 1, x raised to power 15 minus 1 over x raised to power 10 minus 1. A part is 2/3, B is 3/2,
C is infinity, D is 10. Okay, so this question is like this. You have limit x approaches to 1, x raised to power 15 minus 1 over x raised to power 10 minus 1. As you know, if you put direct value here, you just check it out here, you are getting here 1 raised to power 15 minus 1, 1 raised to power 10 minus 1, you get 1 minus 1, 1 minus 1. Here you are getting 0 over 0 form, right? 0 over 0 form. So we cannot put it like this. We cannot solve it like this. Here, children, we can apply a formula. So what is that formula? Let us write that formula. X approaches to a, x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a is equal to n a raised to power. We can apply this formula here for this question. So how can we apply? देखो कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप इसको. आप क्या करो, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक लगाओ चिल्ड्रन. आप x अप्रोचेस टू 1, मैंने यहाँ लिखा x रेज़्ड टू पावर 15 माइनस 1 और नीचे x माइनस 1 लिख दिया और नीचे भी कर दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x रेज़्ड टू पावर 10 माइनस 1. देखिए x माइनस 1 से मैंने यहाँ भी डिवाइड, कट तो जाएंगे चिल्ड्रन ये, बट हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं. देखो यहाँ पे 1, तो 1 की पावर आप 15 कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे 10 कंसीडर कर सकते हैं और फॉर्मूला आपका यही लग जाएगा. तो देखिए ऊपर आपके पास आ गया n 1 रेज़्ड टू पावर 15 माइनस 1. हियर यू आर गेटिंग 10 10 माइनस 1, समथिंग रेज़्ड टू पावर एंड 1 रेज़्ड टू पावर एनीथिंग इज 1, तो आपके पास 15 अपॉन 10 रह गया यहाँ पे. 5 3 जा 5 2 जा, so answer is 3/2. So answer to this question is 3/2. Answer is B. So I hope you have understood it. So keep on enjoying mathematics, children. Again I am telling, mathematics is a very easy subject, right? So keep on doing practice. The more question you do, the more confidence you will gain. Confidence is your certificate, and confidence is gained only through practice. So my advice is practice, practice and practice is the only key to learn mathematics. Okay, thank you.